Assalamualaikum and welcome to the episode number 11 of ARD Women's Podcast. Myself Ahmad, आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि हम 100 का जो वुमेन टूर्नामेंट चल रहा है उसके पॉइंट टेबल पे टच डाउन करेंगे. देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है अपकमिंग साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए. हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस टच डाउन करेंगे एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आज पीसीबी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया दैट इज के domestic central contracts announced किए गए फीमेल क्रिकेटर्स के लिए. But I am more than delighted to formally welcome Shafqat Shabbir, who works for CricWick. He has been to our channel previously as well, and we got a really good response. So let me formally welcome Shafqat भाई. कैसे हैं, क्या हाल चाल है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सकीना एंड अहमद. हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर और या दैट्स इट. All right. And Sakina, what about you? क्या हाल चाल है? Walaikum Assalam and Alhamdulillah, I'm very well. Hope you're doing good too, Ahmed. Yeah, I am doing fine, Alhamdulillah. Viewers and listeners, do hit the like button, do share the podcast as soon as it is available to you, and subscribe कर दें if you have not done so already, and do give a huge follow to Shafqat Pai. Twitter handle of Shafqat Pai and his channel is in the video description, and to give a huge follow to Sakina Naz as well, who is doing such a wonderful stuff on Twitter platform as well. It's Naz O3 के Twitter handle से आप इन्हें find out कर सकते हैं. So Sakina and Shafqat Bhai, let's get the ball rolling towards the agenda. Let's get into the PCB announcing central contracts for Pakistan female cricketers. So Shafqat Bhai, I will turn towards you first. What is your take on it? Why it was much needed and was long anticipated के फीमेल क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं? ओवर टू यू. राइट, सो या दिस इज सो ह्यूज. लाइक फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन ना अब तक आपके जो फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स होते हैं, जो आपका एक पूल है अराउंड 15 to 20 का. डोमेस्टिक क्रिकेट तो चलो सब लोग खेलते हैं. जब भी डोमेस्टिक कोई टूर्नामेंट आता है उसमें प्लेयर्स गेट पेड, उनको डेलीज भी मिलती हैं, उनको मैच फीस भी मिलती है, फिर जो विनिंग प्राइस होती है उसमें से भी उनको कुछ हिस्सा मिलता है. बट उसमें वो दैट इज नॉट अनफ के एक जो फ्रिंज प्लेयर है या जो डोमेस्टिक का प्लेयर है वो सस्टेन कर सके 12 मंथ जो है उसमें चल सके. वो ट्रेनिंग भी करनी होती है, आपने इक्विपमेंट्स भी लेने होते हैं. अब इसमें होता ये था कि वो जो 15-20 आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल टूर्स पे भी जाते थे, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता था. तो दे वर वेल ऑफ कंपैरेटिवली जो बाकी लोग होते थे आपके नीचे से 30-40-50 लोग. तो अब उसमें ये होता था कि वो लोग एक काफी गैप आ जाता था क्वालिटी का भी, ट्रेनिंग का भी. बट अब ये होगा कि आपकी जो 70 ऑड विमेन प्लेयर्स हैं इनको मंथ मिलेंगे. जिस तरह से इनका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 11 महीने, तो दे विल बी एबल टू ट्रेन वेल, दे विल बी एबल टू लुक आफ्टर देयर डाइट. और उसमें एक फैक्टर ये भी होगा कि दे विल स्टे कमिटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट. अब मैं 5 पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट फ्रेटर्निटी में जो ये ट्राई करते हैं कि हम सिर्फ क्रिकेट तक ना रहें बल्कि हम दूसरी गेम्स भी खेलें. जैसे सॉफ्ट बॉल खेलती हैं कुछ गर्ल्स, कुछ क्रिकेटर्स के लिए गेम्स खेल रही होती हैं. फुटबॉल में मैंने ज्यादा लोग देखा है. अभी जब नेशनल गेम्स थी क्वेटर, हमारे कुछ प्लेयर्स ने जाना था यहाँ से कराची टूर्नामेंट के लिए. तो मैंने सुना था कि अराउंड 6 to 7 गर्ल्स फर्स्ट ट्रेवल टू क्वेटा और फिर वहां से फिर वो कराची गई थी. तो गर्ल्स ये कि वो और भी 3 स्पोर्ट्स साथ लेके चले. उनमें उनको आई नो दिस प्लेयर जिनको आर्मी की तरफ से मंथली मिलता था, देन शी वाज एबल कि वो क्रिकेट की ट्रेनिंग भी अपने साथ साथ कर सके. तो अब इससे ये होगा कि वो लोग अपना ऑफ कोर्स घर वालों को भी बता सकेंगे कि वी आर प्रोफेशनली कॉन्ट्रैक्टेड, तो लेट अस कंटिन्यू आवर प्रोफेशनल करियर. तो अब आपका वो जो
70 और लूप में रहेंगे, जो हम बात करते हैं ना कि हमारा पूल बहुत छोटा है अवेलेबल टैलेंट, वो अब एक तरह से एक्सपैंड हो जाएगा। जिन 70 ऑड प्लेयर्स का फ्रॉम कराची टू खैबर जिनका नाम आया टू क्रिकेट, वो हर टाइम ट्रेन करेंगी, ऑफ कोर्स ग्रो एंड डेवलप इनटू गुड प्लेयर्स। एक बात और मुझे याद आ गई, वो ये थी कि आई वाज टॉकिंग दिस वन ऑफ दिस डोमेस्टिक प्लेयर्स, और शी हिंटेड एट अ पॉइंट कि एक वक्त आएगा सून आई बी गिविंग अप, राइट, कि बिकॉज इसके अंदर प्रॉपर आपको Yeah. आप अर्न नहीं कर रहे हो। जब टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट आप खेलते हो, अगर आप फर्स्ट लेवल के बनते हो, फिर आपको आप कह लो दोस्त से डोमेस्टिक, अगर आपको प्रॉपर तो आपको 2-3 लाख मिलता है, लेकिन आप वो 12 महीने सस्टेन नहीं कर सकते। बट अब ये अब इसका मैं एक अप्रोक्सीमेशन 50,000 भी देता है, आई थिंक वो बनता है अराउंड 36 लाख, Yeah. 50,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yeah. राइट। तो अभी जो आपके मेंस जी के जी। न्यू सेंट्रल Yeah. कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं ना, तो उसमें जो ए कैटेगरी है वो आपकी अराउंड 40 या 45 लाख की थी, शायद क्रिकेट ने भी स्टोरी की थी। तो आई थिंक मिनिमम 50,000 होंगे, क्योंकि पीसीबी ने जो डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखा है के लिए, उसमें भी उन्होंने उनको ये कहा है सारे डिपार्टमेंट्स को कि आप जिस प्लेयर को भी पीसीबी इटसेल्फ शुड सेट अ प्रेसिडेंट के जी। मिनिमम 50,000 हो होना, आई थिंक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन कर दिए हैं। सकीना, लेट्स कवर द क्रिकेटर्स। ऑफ कोर्स 14-15 नेम्स ऐसे हैं जो सीनियर लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो सकीना, कमिंग टुवर्ड्स you, how much important would that be? Your additions to the points explained by Shafqat bhai regarding the contacts given to these female athletes. Over to you, Skina. Thank you, Ahmad. First of all, the credit where is due. Zakasha Saab played a key role when the first central contracts was announced back in 2011 or 2010 for the women cricketers, and he also played a very key role to making departments giving contracts to the players at that time. तो उनको क्रेडिट पूरा जाता है इस चीज़ का, क्योंकि फाइनेंशियली उन्होंने एक तरीके से पहले भी स्ट्रेथन किया था, अब भी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने इसमें डिसीजन ले लिया गया तो किसी भी कांट बैक ऑफ ऑन इट। अब जब ले लिया गया तो दे हैव टू कंटिन्यू इट। Yeah. तो इसलिए सबसे पहले तो उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का पूरा। और दूसरी चीज़, जैसे शफकत ने बात की कि आपका जो प्लेयर है वो 12 मंथ ट्रेनिंग तभी करेगा जब उसको पता होगा कि उसको कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा है। वो गिव अप नहीं करेगा स्पोर्ट को अगर उसको पता होगा कि उनके पास एक वे फॉरवर्ड है। अभी पास्ट में ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं जहाँ पर प्लेयर्स ने डिफरेंट और स्पोर्ट्स को चूज किया क्योंकि वहाँ पर डिपार्टमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे थे। जैसे वापडा देता है, आपका आर्मी देती है, तो वो डिपार्टमेंट्स उनके कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे थे, तो प्लेयर्स स्विच टूवर्ड्स दो स्पोर्ट्स। तो आपको क्रिकेट के अंदर अगर आपको टैलेंट रिटेन रखना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि आप जो है उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दो, ताकि जो है वो दे कैन कंटिन्यू देयर ट्रेनिंग एंड दे नो कि वो किस चीज़ के लिए खेल रहे हैं। फिर उसके अलावा जैसे आपने बात की जो सीनियर प्लेयर्स को पीसीबी की प्रेस रिलीज के हिसाब से Yeah. 14 नंबर 14 दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन आई Yeah. जस्ट सॉ द ईएसपीएन स्टोरी क्रिकेट इन्फो की, उन्होंने जो है वो उसमें क्लेम किया हुआ है कि जवेरिया खान इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। तो जवेरिया खान का नाम निकाल के भी 14 प्लेयर्स बनते हैं, जवेरिया खान का नाम इंक्लूड करके 15 प्लेयर्स बन जाते हैं। वी हैव अनदर जवेरिया खान इन द डोमेस्टिक सेटअप एज वेल, सो देयर इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन देयर कि which one of जवेरिया खान was is included in those players, और ये 14 है कि 15 प्लेयर्स हैं जिनको मिला है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपके लिए ये टैलेंट जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इसमें आप ऐसे कुछ नाम भी देख सकते हैं जो शायद दोबारा नेशनल टीम तक ना आ सकें। जैसे कि इसमें जवेरिया रऊफ का नाम शामिल होगा। शी माइट नॉट बी एबल टू मेक Yeah. इट अगेन टू द नेशनल टीम। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपके डोमेस्टिक को। ये वो प्लेयर्स हैं जो आपके डोमेस्टिक को कम्पिटिटिव रखते हैं। ये वो प्लेयर्स होंगे जो अगर आप कोई डोमेस्टिक कंपटीशन कराते हो जिसमें आपकी नेशनल टीम किसी टूर पे है और आप एक डोमेस्टिक कंपटीशन कराते हो, तो ये वो प्लेयर्स हैं जो उसको कम्पिटिटिव रखेंगे और क्वालिटी अच्छी रखेंगे। तो उनका रिटेन होना ही बहुत ज़रूरी है। So, सो या दैट्स सम ऑफ द पॉइंट्स।
एंड ऑब्वियसली आई वाज अ All बिग, right, all right. अगर जवेरिया खान ये वही वाली जवेरिया खान है, सो आई एम अ बिट शॉक, लेकिन इट वाज काइंड ऑफ कमिंग टू, लेकिन या सो या All right. Well put. इसी से लिंक कर लेते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज काइंड ऑफ कैजुअल. All right. Well put. इसी से लिंक कर लेते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज काइंड ऑफ कैजुअल सेगमेंट. I would enlighten it to my viewers as well. Uh, जिसमें हम प्रिडिक्शन करने लगे हैं. ऑफ कोर्स जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनकी अभी सेंट्रल कॉन्टेस्ट कैटेगरीज अनाउंस करना बाकी हैं पीसीबी की तरफ से. सो सकीना एंड शफकत, प्लेयर्स की लिस्ट इधर मौजूद है. आई विल गो वन बाय वन. सो शफकत भाई, बिस्मा मरूफ के लिए आपकी क्या प्रिडिक्शन है? ए कैटेगरी मिलेगी? इजंट इट टू ऑब्वियस टू से? A category, without a shadow of doubt. ऑल ऑल राइट. सकीना, निदाडार के बारे में बताएं. ऑब्वियसली ए कैटेगरी, ही इज कैप्टन टू, तो देयर इज नो डाउट देयर. ए कैटेगरी. या सो आलिया रियाज को लास्ट टाइम एक कैटेगरी मिली थी. सो शफकत भाई, योर टर्न. Um, I would go with B for Alia. बी. क्योंकि ऑलराइट. इसमें इसमें अच्छा मुनीबा अली. लास्ट में ये थी ना तो या गो अहेड शफकत भाई. like इस दफा you have got like people who have put their arms up कि they are like well deserving of the A category as well. So I think like if जो like PCB also looks into this कि हमने A में कितने रखना है, B में कितने रखना है, but of course first priority तो यही होती है ना कि performances को देखना है, उनकी utility को देखना है. But seeing all those, of course Alia is a veteran और उन्होंने अभी हमें वो एशिया कप वाले मैच में जब इंडिया को हमने हराया था, she performed well. So या but I would go for B for her. वेल पुट. सकीना, आपका मुनीबा के बारे में क्या प्रेडिक्शन है? कौन सी कैटेगरी मिलने लगी है? आई थिंक ए कैटेगरी, शी विल डेब्यू इन द ए. उनको रिवॉर्ड मिलेगा उनकी T20 वर्ल्ड कप में होपफुली. सेंचुरी का, एंड एंड देन शी हैड अ सेंचुरी इन ODI एज वेल. या एंड शफकत भाई, आप ये क्लैरिफाई भी कर दें कौन से जबीर खान को आज मिला है, कौन से जबीर खान को मिलना है. सो ओवर टू यू. एज यार पिछले साल तो ये मिला, बी मिला था. जो कंफ्यूजन जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से स्किनर क्रिकेट की स्टोरी का था और पीसीबी ने वो 14 लोग लिखे हैं उस तरह से, बट आई फील कि अभी से अगर वो अपनी जो ओजी जवेरिया खान है उनको अगर अभी से वो काइंड ऑफ डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में ले आएंगे तो इट विल बी अ बिट हार्श ऑन हर, गिवन हर सर्विसेज, और गिवन के लाइक थिंग्स आर हैपनिंग, और अभी जो हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे उनमें शायद उनको पे भी अच्छा किया जाए. आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग वी शुड रिटेन हर, और maybe I would go for B for her if she is there. वरना तो of course it would be a bit of a shock के उनको हमने उधर कर दिया. But I think going for the next cycle of 12 months we should kind of give her B. या सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग अ स्टार ओवर हियर बिकॉज थोड़े से कंफ्यूजन है. सिद्रा अमीन, स्किना, ओवर टू यू. या इट्स अ टफ कॉल बिकॉज T20 में उनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है. सो अगर मुझसे पूछेंगे तो आई माइट बी पुटिंग हर इन द B कैटेगरी, लेकिन आई थिंक PCB फेवर करेगा और A कैटेगरी देगा. मैं जरा सिनेरियो देके ओह बात वाओ, कर रही हूँ कि आई पिछले साल थिंक वैसे सी इट्स, कैटेगरी ने. यस शी वाज इन C कैटेगरी बिकॉज जो रीजन दी गई थी वो यही दी ओके. गई थी कि शी इज प्लेइंग वन फॉर्मेट, लेकिन इस साल जो है वो इस सीजन में PCB ने उनको हर फॉर्मेट खिलाया है, दो ही हैं लेकिन हर मैच ही खिलाया है. तो आई थिंक दे विल गिव हर A कैटेगरी. ऑल राइट. एंड व्हाट अबाउट सिद्रा नवाज? शफकत भाई, ओवर टू यू. Like सिद्रा अभी जो हमने protest की थी थे वो keeping like जिन्होंने अपने वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में अगर तो वो अपनी उस like into the international cricket if she plays for Pakistan.
आगे जाते हुए ना, तो आई थिंक उनकी एक वो चीज देखते हुए Uh, so you मैं have उनकी बैटिंग बट दैट्स मिल जाए, you agree? but Yeah, yeah. but like, maybe the team should communicate. Of course, उनका last time जो batting देखी थी, but like she needs to translate that into the international cricket as well. All right. So B बोला ना आपने? नहीं मैंने सही बोला है. Oh, okay, okay. My bad, my bad. Then Sakina, आप दो players की टर्न ले लें. Let's keep it moving forward quickly. Anusha, Nasir and Shahbaz Zulfikar, very quickly. डी कैटेगरी, क्योंकि दोनों न्यू प्लेयर्स हैं, इनको डी कैटेगरी मिलेगी. इनको किसी भी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स में रखा, J इट मींस कि दे category. आर All गोइंग टू right. गिव देम सेंट्रल, तो इट्स Yeah, yeah. Very well put. Uh, शफकत भाई, आपके दो प्लेयर्स बन रहे हैं नजिया अलवी एंड डियाना बेग. अच्छा, नजीहा जो है वो तो अभी वो आई थिंक she would also be in B, and for Diana, since she's coming back into it, uh, she seems to be in जो हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था उसमें कुछ एक दो मैचेस ऑन एंड ऑफ किए थे, बट स्टिल वी नीड हर. जो हमारे फास्ट बॉलिंग स्टॉक्स हैं उसमें भी, एंड वी नीड टू कीप हर स्पिरिट्स अप since she's coming back from her injury, or plus we can not Yeah. doubt her commitment towards like the game. To I would go for A for her, but I feel like कि शायद उसको B कर दें वो लोग, but my choice would be A for Diana. So should I put And you know A? what? And you Yeah. know what? Okay. Diana is one of those players who's living away from home. Like she has to leave her home, her parents, her family, and like she has to live in Lahore. Yeah, yeah. Uh, of course, we can't much doubt about her. Skinner, over to you regarding Fatma Sana and Nasha Sandhu. okay, Nashra is going to be in B category. Fatma, I would want her to be in A category, लेकिन I don't think VCB is going to put so many players in the A category, so she might end up in the B. Yeah. All right. So yeah, I think so B आ जाएगा. Yeah. Uh, शफकत भाई, आपकी टर्न आ गई है. That is Umaima Sahel and Sadia Iqbal. For Omema, I would go for Yeah. D, and for Sadia, I would go for. I think Sadia should be B, but I feel को शायद उसको C करना है. All right. Let's put C. दो प्लेयर्स आपके आगे हैं, तुबा हसन एंड सैयद आरूफ. सकीना, over to you. Well, I want to put Tuba Hassan in the B category, but I don't. I think she might have lose a favor with the current management for some reason. So I think she's going to end up in the C, and Tuba is going to be. Sorry, Arub is going to be in the D category as she's a newcomer in that side. All right. And Iman Fatma, Shafqat bhai, last player from our list. Um, I think Iman, since it's new to the team, and like उसको भी वो D पे ही रखेंगे, but I feel like कुछ players ऐसे होते हैं जिनको you would need to hype up, and I would I would say कि B होना चाहिए, but D होगा, तो let's go with D. And I think Umme Hani and Sadaf Shams is going to be in there as well. Sadaf might Yeah. end up with C category contract, and Umme Hani is going to be in the D1. Category. Let's switch it over to the hundreds, and here you go. Hundreds का
points table as of now looks like Welshfire are pretty much nailing towards the final, and Southern Brave and Northern Superchargers are then leading the pack with number two and number three spots. So, Shafqat bhai, if I come towards you, how have you seen the development of that 100 women's, और इस दफ़ा तो बड़े close matches जा रहे हैं. So, your overall take on the table itself और आपकी predictions क्या हैं finalists के लिए? शफकत भाई, over to you. राइट, तो अभी ये जो 100 स्टार्ट ये एडिशन स्टार्ट हुआ था, इससे पहले भी देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अराउंड कि व्हाट्स द यूटिलिटी ऑफ 100 इन इंग्लिश क्रिकेट, और उसमें लाइक ऑल द वॉइसेस, मोस्ट ऑफ द वॉइसेस, they were in the favor कि more than the men's format, it the 100 is helping the women's format. Like कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि 100 को scrap कर देना चाहिए, it is taking up like एक अच्छा खासा आपका जो हिस्सा है आपके इंग्लिश समर का, वो it is taking up that, और उससे आपकी यूटिलिटी क्या है. बट मेंस गेम के लिए लोग ज्यादा हार्श हो रहे थे, बट फॉर वुमेन्स गेम it has been a game changer. You see most of them, lots of games taking place at Lords. उसके अलावा you see players coming over from other countries. Then you see that English women's, like उनकी एक जो white ball game है, एलिस कैप्सी को देख लें आप. एलिस कैप्सी, शी हैज कम थ्रू द रैंक्स, और जो उनकी 100 में परफॉर्मेंसेस थी, और उसके बाद शी गॉट दिस रन विद द इंग्लिश women's team. So I think Yeah. the 100 women's competition in the past as well, or it's doing really well for women's cricket. और बस एक चीज पे मैं थोड़ा सा गटेड हूँ. आई वुड हैव लव टू सी सम पाकिस्तानी प्लेयर प्लेइंग इन द 100. और मैंने सुना भी था कि Yeah. आशन सिंह को अप्रोच किया था अराउंड 2 to 3 टीम्स ने, बट एट दैट पॉइंट उन्होंने अपना वो एक डिसीजन ले लिया था टू रिटायर. बट आई वुड लव टू सी कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर, फातिमा को, like Fatma was really good उसमें फिर ब्रेक में, and she deserved one of the teams. Like अच्छी खासा बड़ा पूल है, 8 टीम्स खेल रही हैं, तो अच्छा, खैर ये चीज हो गई. Yeah. तो इस दफा मैचेस काफी अच्छे हो रहे हैं. यू सी एक और चीज मैं देख रहा था कि some of the Australian rookies are over here in the 100, or someone like Samriti Mandana, Yeah. like she's scoring runs. तो given उस कंडीशन में कि to come from the outside and they get a chance to perform in England, तो उनके लिए भी अच्छा होता है. राइट, अच्छा, अभी मैं अपने वो प्रेडिक्शन कर दूं फॉर द फाइनलिस्ट. आई वुड से कि Yeah. Southern Brave, one of the teams would be Southern Braves, and other I feel is it would be a toss between Welshfire and Northern Superchargers, because I feel like Northern Superchargers on their day can like pull off, like they can come up and fight things. But still Welshfire, given कि उन्होंने अब तक अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको इंटैक्ट रखा है, but the next round of games they'll have to back the performance जो शुरू में की है. तो I'll go for Southern Brave and Northern Superchargers. So here are the predictions from Shafqat bhai. Match week 5-6, पिछले पॉडकास्ट में हमने पहले 4 मैच वीक्स को कवर किया था. So I will be handing the mic to Sakina Naz. Sakina Naz, मैच वीक 5 और 6 के जो की परफॉर्मेंस हैं उन पे टच ऑन करें. Over to you. Well, yes, we saw a century, the first one in the hundreds for the women's category, and obviously, Tammy's played a brilliant inning. He is like the sweetest person, लेकिन जब भी मैं उनका नाम सुनती हूँ मुझे 2016 की वो बैक टू बैक सेंचुरीज याद आ जाती हैं जो उन्होंने हमारे अगेंस्ट की थी. So for everyone, she is like the sweetest person. For me, she is a horror. But yeah, she's a brilliant player. और लास्ट ईयर जो है वो समर के अंदर जो है वो इंग्लैंड ने उनको T20 से ड्रॉप कर दिया था. So it like we can say it was a bit harsh call. Like लेकिन कहीं ना कहीं she wasn't up to the mark, and she obviously उनको खुद भी उस चीज़ का realization था, तो उन्होंने जिससे किसी कम बैक किया. I think she is going to be a recall in the England team, and she might be playing against against us again in our series. So मेरे लिए तो वो फौरन ही दूसरा होगी. And then we have deja vu चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है.
आपने वो just सीरीज two देख, cents on पता नहीं है ना आपको? yeah, just 2 cents on Tammy. या श्योर। Uh, Yeah, उसमें go like ahead. there was this one tweet ke Tammy is such a legend that she's got 100 she's got 100 in 4 different formats. 100 maybe, T20 maybe, or one day maybe, or test match. One of the rare Yes, Wow. breeds in modern day cricket. yes, and she have Wow. 200 Wow. in Wow. टेस्ट एज वेल, डबल सेंचुरी भी की हुई है Yeah, टेस्ट में इन्होंने। yeah, like such a legend. यस यस। Mm. ओके, एंड देन Uh, वी हैव मिजाना केप। कैप yeah, जो है शी इज अ ब्रिलियंट ऑलराउंडर, और अभी जो है आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर इन पाकिस्तान। I hope she is coming because we saw CPL contracted list और उसमें उनका नाम था, so I'm in doubt still, लेकिन अभी तक क्योंकि साउथ अफ्रीका ने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, लेकिन I really want her to come to Pakistan. I know पाकिस्तान के लिए खुद के लिए बेनिफिट शायद ना ही हो, I लेकिन for like to make the match competitive और उनको अब पाकिस्तान के ग्राउंड्स में खेलते हुए देखना would be a like big thing for us. So yeah, I really want her to be in Pakistan, and yeah, she is doing a brilliant job. Or I think I was reading somewhere that she has like take every other in five ball set की विकेट जो है वो उस तरह ले रही है बिल्कुल स्टार्टिंग स्पेल्स के अंदर ही अपने। तो yeah, she is doing a very good job there yeah, yeah. और काइंड ऑफ डिजर्विंग एज वेल। लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका क्रिकेट के ऊपर बहुत टफ रहा था, इंक्लूडिंग कैप के ऊपर, तो या शी काइंड ऑफ डिजर्व दिस सक्सेस। देन वी हैव पीबी in there as well, Let's say, and she did, and she played a really good inning, and she's young, she's a future, so yeah. Yeah, I'm so all happy right, for all Phoebe. right. Like like इस उसके लिए ये वाला जो इंग्लिश समर है that has been like grand, she'll remember it for the rest of her life. uh, अभी उसको टेस्ट कैप भी मिली थी और फिर उसने लिमिटेड ओवर्स में भी खेली है ऑस्ट्रेलिया के लिए, and then she came in as a replacement 100 if I'm not wrong, Sakina. Yeah, she might be, I'm not recalling it. So, Skinner and Shafqat, we are moving towards the peak stage, I would say, because last segment है और सब वेट करेंगे कि आप दोनों की इनपुट्स लें, दैट इज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्क्वाड फॉर साउथ अफ्रीका। पहले ऑडियो स्क्वाड पे आ जाते हैं। स्किनर, कमिंग टुवर्ड्स यू, आपसे मैं थैंक्स जानना चाहूँगा, एंड मीनवाइल शफकत भाई, डू मेक योर माइंड अप रिगार्डिंग द वीकनेसेस ऑफ ऑडियो स्क्वाड वर्सेस साउथ अफ्रीका, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हियर फ्रॉम स्किनर। स्किनर, थैंक्स कवर कर दें ऑडियो स्क्वाड में वेरी शॉर्टली, ओवर टू यू। Well, I think our batting top order in ODIs will be our strength there. Agar Muniba and Sidra and Visma can carry their forms from the last season, और domestic में भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे मुनीबा। she was in a bit of hiccup, लेकिन इंटरनेशनल में she was doing really good। तो आई थिंक अगर ये तीनों जो हैं वो एक अच्छा हमें स्टार्ट देंगे ऊपर से, तो दैट विल बी आवर स्ट्रेंथ। और अगर मैचेस जीतेंगे तो हम इसी चीज़ की वजह से जीतेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलेगा। एंड इसके अलावा वी हैव अ रियली गुड bowling unit, spin department, especially with Nashra, Ghulam Fatma, Nida herself, and obviously we might be seeing one of the Umaima or Umehani coming in. So yeah, I think spin or and the top order Yeah, will be our strength. all right, and when we talk about weaknesses, Shafqat bhai, very shortly your take on the weak spots of audio squad. Like इसमें like fast bowling में of course we can rely on Fatma Sana. She's been doing well for us, but Tika hasn't played for Pakistan already. Like she was with Pakistan team in 2017 World Cup squad. उसके बाद शायद उनको अभी अब कॉल अप आया है वो जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में she was opening the bowling, और उसमें like हमारी जो बॉलिंग होगी, फास्ट बॉलिंग होगी, उसमें विल हैव टू कीप थिंग्स टाइट. ऑफ कोर्स majority of overs will be bowled by spin bowlers, but start of the innings or the end of the innings अगर कभी कहीं पे मैच टाइट भी हो जाता है, and we have to like, so I think Fatma will have
will need some support from other fast bowlers भी उनके साथ खेलेंगी. तो hopefully Diana will hit the ground running, and if Wahida gets a chance, so she'll also do well. Plus, if Alia plays, so we'll also need her contributions with the ball. And you see, like South Africa are on the charge. Normally, you see Laura top of the order, and like there are the batters. So I think our fast All right. bowlers. I see that our fast bowlers will have to keep tight lines. And given कि जो हमारी Arsenal है, उनको they'll have to be spot on right from the. तो वेरी लास्टली टच ऑन कर लेते हैं पाकिस्तान के T20 स्क्वाड पे. सो स्किन आपकी तरफ आते हैं. लेट्स स्विच द रोल्स. आप इस टाइम वीकनेसेस कवर करेंगे एंड शफकत शबीर विल टच ऑन स्ट्रेंथ्स. सो स्किन वीकनेसेस आपको क्या लग रही हैं स्क्वाड में? बैटिंग हमारी वीकनेस बैटिंग होगी इस यहाँ पर, क्योंकि T20s के अंदर वी लैक अ पावर हिटिंग, and then we are going with Shawaz Zulfikar here, or Sidra Amin is the other option for the opening. I might have preferred Iman Fatma coming in, जैसे कि हमने पहले भी एशियन गेम्स के स्क्वाड में बात की थी कि ईमान फातिमा might be a good option other than Shawaz, and Sidra it feels a bit forced कि सिद्रा को जो हम T20 का बार बार खिलाते हैं. बिस्मा के यहाँ से थोड़ा सा वो स्टेबिलिटी वाला पोर्शन कवर हो जाता है, लेकिन वी माइट अगेन कि जहाँ पर हम हिटिंग की बारी आती है तो वहाँ पर शायद हम अगेन स्ट्रगल करेंगे थोड़ा सा. निदा और आलिया को थोड़ा सा लेना पड़ेगा चार्ज उस चीज़ के लिए. एंड आई थिंक एक और जो कंसर्न है मेरा वो बहुत ज़्यादा वो ये है कि दे पुट सादिया इकबाल इन दिस स्क्वाड, बट जो हमारा एशियन गेम्स का स्क्वाड है T20 का उसके अंदर दे पुट अनुषा नासिर इन. और दो प्लेयर्स ऐसे हैं एशियन गेम्स के स्क्वाड के अंदर जो इस स्क्वाड के अंदर नहीं है, अनुषा नासिर एंड सादिया अनुषा नासिर एंड उमायमा सुहेल. उमायमा मेक सेंस कि बिस्मा आ रही थी तो उनको उन्होंने रिजर्व में कर दिया, लेकिन सादिया वाले पोर्शन मेरे समझ से बाहर है. लाइक आई माइट हैव प्रेफर सादिया इकबाल इन द स्क्वाड फ्रॉम द स्टार्ट. एशियन गेम्स के स्क्वाड में भी मैं उन्हीं को रखती, लेकिन अगर आपने अनुषा को वहां रख लिया था तो फिर इसका मतलब फिर यहाँ पर उनको बिठाना इट डजंट मेक सेंस. कि इट फील्स लाइक कि शायद जो सिलेक्टर्स हैं वो खुद ही नहीं माइंड बना पा रहे हैं उनको किसके साथ जाना है. और दूसरी चीज़ ये कि इट्स अ होम सीरीज, तो आप यू कुड हैव स्ट्रेच्ड द स्क्वाड टू द 17 प्लेयर्स, लेकिन आपने 15 पे फिक्स किया है और 2 प्लेयर्स को छोड़ दिया जो एशियन गेम्स खेलने जाएंगे. एशियन गेम्स का हर मैच नॉकआउट है हमारे लिए. तो आई थिंक स्ट्रैटेजी तो ये होनी चाहिए थी कि यू वांटेड टू कि आप 2 मैचेस हम जीतेंगे पहले और तीसरे मैच में हम यंग टीम उतारेंगे, लेकिन आई फील्स लाइक दे नो कि उन्होंने 2 मैच नहीं जीतने, एक सीरीज पहले नहीं जीतनी है. इट्स लाइक डजंट मेक सेंस टू मी. सो यस दैट्स द पॉइंट दैट आई एम वरीड अबाउट. आई थिंक बॉलिंग विल वर्क वेल, लेकिन बैटिंग में जो है वो वी माइट बी आयशा सिंह की कमी हमें महसूस होगी. और ऊपर से जो ओपनिंग पोर्शन है, क्योंकि आप सिद्रा के साथ जाएं या ना जाएं, होता हमेशा यही है, पिछले पूरे साल से देखते आ रहे हैं कि बिस्मा जो है वो पावर प्ले के अंदर ही वॉक इन कर रही होती हैं. तो फिर आप एक यंग बच्चे के साथ चले जाएंगे तो वुड बी बेटर, लेकिन आपने शवाल लेकर आए हैं ईमान की जगह. सो दैट्स अ बिट लाइक मैं नहीं हूँ उस चीज़ पे खुश. राइट. सो शफकत भाई, इस स्क्वाड में आपको पॉजिटिव चीजें क्या नजर आ रही हैं? ओवर टू यू. Right. So yeah, एक तो मैं इस बात पे like I would like to second what Sakina said कि आपकी home series है, आप उसमें reserves में ना भी रखो players को, you can add them into the main squad, and of course आपके पास choice है जब भी आप उनको select करें, या जैसे आप पहले 2 मैच जीते हैं और उसके बाद आप एक गेम कर सकते हैं. बट ट्रैवलिंग रिजर्व में रखना, उसमें फिर ये होगा ना कि जब कोई प्रॉपर्ली किसी को इंजरी हो तब उनमें से आप किसी प्लेयर को कर सकते हैं कैरी, बट फॉर उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होता है कि वो स्क्वाड में हो. तो बट आई फील लाइक अभी जब सब प्लेयर ने जाना है कराची, शायद उनका 17 या 18 से उनका कैंप लग रहा है. शायद आज कल ये सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो सब लोग होंगे तो वहीं पर ही ग्राउंड में होंगे और टीम एक साथ ही होगी रिजर्व की. बट स्क्वाड में होना
that would have added to the confidence. Acha, coming to the positive things about this squad, usme I feel ke I would love to see ke Saida Rumsha playing all the three games, and we all know like what she can do with the ball. She gives it a good rip, and uh, she's a gun fielder. uh, एक तो उनका उसके अलावा नशरा's bowling, I'll be excited about that. She bowls that tight line, और वो शायद हमारा leading wicket takers में in T20 guys. And these overs are bowled by Aroop, Nashra, and Fatima Sana, like, and then Nida with her off swing. So this will be like, for me, this will be like exciting overs for our strengths. And when it comes to batting, तो we see कि बिस्मा को हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था, अभी वो जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा था उसमें भी देखा था कि बिस्मा used to walk in early and then she used to bat throughout the innings. So she can bat long and she can hit long as well. तो उसमें like that will be one of the positives के लोग जैसे Sakina Naz करता था, back on Bisma के rotates and bats throughout the innings, और एक hand को वो fold करके रख सकते हैं. That will be one of the positives. And then like Nida, she's coming back, and like and now she'll be leading the team as well. So I think she'll be also taking added responsibility whenever she'll be in the action or in the middle, ball के साथ भी और bat के साथ भी. So maybe we'll see a bit charged up Nida, especially while batting. I can see कि जब हम batting करेंगे ना, जैसे अगर आप देखें last Commonwealth Games में she was hitting the ball really hard. तो I feel like उनकी batting will be one of the strengths जहाँ पे अगर हम power hitting को lag करते हैं. And coming to Muniba Ali, like Muniba too can bat throughout the innings. और वो आयरलैंड वाली innings में हमने देखा था कि उसने मिडवे जाके उसने चार्ज भी बहुत अच्छा किया था. शी कैन ऑल्सो बैट थ्रू आउट द innings, जो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. समवन लाइक मुनीबा इज like she can keep for 20 overs. She's like so chippy behind the stumps. She can Yeah, keep everyone like charged up, and she can yeah, bat throughout the innings as well. So she's got great fitness and stamina. So like batting में Bisma, Nida, Muniba, and then if Fatma Sana can bat, that is also very effective. Of course, उनके 11 over जो तो ही होगा. So like these are the strengths of our T20 team, and I would back them to win the series 2-1. inshallah, inshallah. So on this note, we are about to wrap up episode number 11 of ARD Women's Podcast. जिसमें हमने cover किए PCB announcing the domestic central contracts for Pakistan women's. Then we touched on the 100 women's match week 5 and 6 in specific. और lastly हमने strengths and weaknesses cover किए Pakistan women's squad for South Africa series. I am so much grateful and thankful to both Skinner Naz and I was humble enough to have got the opportunity of having another sitting with Shafqat Pai. So thank you Skina, thank you Shafqat Pai. Listeners इन्हें ज़रूर follow कर दें Twitter पे and of course give a huge follow to CricWick as well. और या आप लोगों के लिए जो है हमने पॉडकास्ट प्लान की सो हमारी पॉडकास्ट को लाइक कर दें शेयर कर दें and do let us know your thoughts your feedbacks any topic which you would like to cover us in the next podcast. So till next podcast, myself Ahmad along with Skina and Shafqat are saying goodbye. We will chit raheं, salamat raheं and Allah Hafiz.